Plan is to talk about tuples, dictionaries, and sets. We'll see how much we'll cover. Now, if you guys remember, to create a list, we require a square bracket. And let's say if I want to create a list, list1 is equal to. This is how we create a list, where we will see list1 is equal to, we'll pass all the values, and the list is created. If you want to check the type of it, list1, and you can see that it is a list, right? Now, what is a tuple? To create a tuple, there are two main differences which we have between list and tuples. To create a tuple, we have to use normal brackets. However, if you want to create a list, you will require square brackets. That is the first difference. Let me pass the values and execute. So if you see that, tuple 1, it is created. And if I check the type of this particular object, it is a tuple. All right. So now, what is the difference? First is obviously the square bracket. We can create tuples using normal bracket, and to create a list, we require square bracket. That is first difference. The second difference is, let's say I want to change the value in this list. I have this list1, and inside this list1, let's say I want to update this 22, and I want to make it as 100, right? So what is the index of 22? Right, so index is 2, absolutely. So 2, if I execute, it is giving me 22, and I want to update this particular value to 100. And now if I check that list1, you see that the value is updated with 100. Now what I want to do is I want to update, let's say this number 3. I see that, okay, in tuple, right? Now I'm going to tuple, and this number is 3. I think by mistake I put single value. I want to update this value, and I want to make this as 2-digit number, maybe 34. What is the index? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, right? Index number 3 we have. So 3, it is giving me 3, and I want to update this to 34. When you try to update this, this will not update. And that is the difference between list and tuples. This is the main difference between list and tuples. Tuples cannot be updated. What is the real-time usage? For example, let's say I have state names. I know that state names will never change. So let's create that as a tuple so that no one can able to change that value. So I would say that tuple is immutable and list is mutable. I can change list. I cannot change tuple. Now, as I cannot change tuple, obviously the functions or the methods associated with tuples will be less, right? Easy. अगर मैं tuple को change ही नहीं कर सकता हूँ, तो tuple में ना कोई append का option होगा, ना extend का option होगा, ना remove का option होगा. If you guys remember in the last class we spoke about that. So tuple dot, मेरे को सिर्फ दो ही फंक्शन दिख रहे हैं tuple के अंदर, और दो ही मेथड्स दिख रहे हैं tuple के अंदर, जबकि लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, right? Because I cannot clear, I cannot append, I cannot extend, I cannot insert, I cannot pop, I cannot remove. All those things I cannot do. Only two functions or two methods are there. One is count and is index. सिर्फ दो ऑप्शन ही है मेरे पास टपल के अंदर.
लेके चलते हैं काउंट। काउंट किसका चाहिए मेरे को? लेट्स से 23 का काउंट चाहिए। आई हैव टू एंट्रीज ऑफ 23 डॉट इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है? लेट्स से आई वांट टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ नंबर 3। लेट मी राइट इट हियर 3। Execute. I am getting 3. Why? Because it is 3. Coincidentally, it is 3. 0, 1, 2, 3. Let's check for 43. It should be 0, 1, 2, right? So dot index 43. The index is 2. Alright. So that is how you can get the, like, you can use these functions associated with tuple. Now tuple one, rest of the options we can do. For example, sum of the tuple, you're getting all the values in the list. Also you can do that. How to create empty tuple? So tuple 1, tuple this is the empty tuple. Now if I want to find the length of tuple 1, because it's a 0, because 0 element coming in, I updated this tuple. Let me create this tuple again, and now check the length of tuple. You see here's 9. Del, can we delete the tuple? Yes, we can. Now, as tuple has limitations, obviously the functions associated with tuples are less as well, and that's why you see that this is what we have. Slicing will remain the same. Let me create tuple 1 again. And here we go. Let's say I want to slice these 4 values. How will I do that? Can you tell me the slicing numbers? What do you think will be the slicing numbers, guys? Only Priyanka is in the class, or any other folks are also there? Quickly. 0, 1, 2, 3. It will start with 3. All right. 4, 5, 6. And we know that when we want till 34, I have to pass one extra value as well, 7. So it will be 3 colon 7. And when we are doing slicing, it will always be square bracket. हमेशा square bracket ही होगा. ऐसा नहीं है कि वो टपल है तो मैं normal bracket कर दूं. No. When you want to do a slicing in Python, it will always be a square bracket, right? So if I go and update this value with a square bracket, you can see that we are getting the value. Tell me what will happen here. Tuple 1, 5 colon. What will be the output? Tuple 1, 5 colon. What will be the output? 0, 1, 2, 3, 4, 5. It will be last 4 values, because it will start with 5 and there is no end out of it, right? I did not mention any end value. So execute, getting this value. Colon minus 1, will this give me something? Confusion?
Start value is 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. End value I did not mention, and it can be backward, it can be forward. But I told Python that go to -1, reverse direction. Getting it? So -1 is the direction. Start value is 5. End value I did not mention. Suppose I mention end value as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let me put it as 8. What will happen now? I want to go from 5 to 8, but direction is negative. So it should give me an empty tuple. All right. So this is the start point, this is the end point, and then direction is important. If I make this as +1, then yes, I'll get some values. Right? 1 is for the direction from left to right. -1 is for the direction from right to left. 5 is this 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Left to right. I am passing -1. It cannot go from left to right because my direction is -1. It will go back side. But 8 is present right side. So it will give me an empty list. However, if I make it +1, now the direction is from left to right. So it will go from left to right. Is that clear, all of you guys? All right. That is also valid. Subham, if you write 3, it is valid as well because I'm giving this as a jump. Right? 3 मतलब क्या है? डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है, बट जंप दे रहे हो तुम 3 का. 1 मतलब कि कोई भी जंप नहीं है. 2 मतलब कि एक जंप है. If I go with 2, what will happen? I'll get 34 and 33. There is jump of 2 from here till here. 1 करेंगे तो कोई भी जंप नहीं है. It will give me all the values. When I go with 2, it will give me alternate values. When I give 3, it will give me 1, and then 2 jump this and this and this. Obviously it will not participate क्योंकि 8 दे रखा है. अगर तुम यहाँ पे 9 दोगे तो तुम्हारी 2 वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी. If I go and put it as 3, you see I'm getting 2 values. Why? Because 34 बाद में 9 दे रखा है. 9 तक तो इंडेक्स है ही नहीं. यहाँ पर 8 तक ही इंडेक्स है, तो ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड करेगा. तो ये उसके बाद 2 का जंप और ये, बिकॉज यहाँ 3 दे रखा है, so it will skip 2 values. So when I increase this, it will jump this. You can say like this is the start value, end value check करेगा, and 3 मतलब कि 2 jump करेगा. Because 1 में क्या है? 1 में there is no jump. It is giving me the direction only. 2 में it is taking 1 jump. This alternate value, this alternate value. अगर कुछ और होता वो. For example, let me start with 1. Will make more sense. Why I'm getting this value? Or let me start with 0. Why I'm getting this value? It is starting with 32. उसके बाद मैंने जंप दे रखा है 2 का, मतलब कि एक वैल्यू स्किप करेगा 43, एक वैल्यू स्किप करेगा 23, एक वैल्यू स्किप करेगा 34, एक वैल्यू स्किप करेगा 23. अगर मैं यहाँ पे जंप करता हूँ 3 का, अब क्या होगा? 32, 2 वैल्यू स्किप करेगा 3, 2 वैल्यू स्किप करेगा 34, 2 वैल्यू स्किप करेगा, कुछ आया नहीं यहाँ पे. We'll get these 3 values. Right, so this is a step size, or you can say jump. So these are the options we have in the tuple. Now the next Python collection data type which we have is dictionary. Now what is a dictionary? अभी तक हमने देखा कि we are able to store the value, which is like let's say list of numbers or list of
characters or mix of values. But now I want to save the value in the form of a dictionary, which is nothing but key value pair, where I have a key, dictionary one. Let's say I'm creating a dictionary one. Just list starts with square bracket, tuple starts with normal bracket, and dictionary starts with curly braces. Is reverse direction jump possible? Yes, reverse direction jump is also possible. Absolutely. But you have to pass the value like this. अभी यहाँ पे तो empty आने वाला है. Past में ऐसे करना पड़ेगा फिर 9:0 something like this, right? So it starts with 23, then 34, then 43. Now dictionary one. Now it is a key value pair. Let's say I want to save customer details. So cust ID is my customer ID, obviously. Colon 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Comma. Cust name A, B, C, D, E. And I want to give the region as well, which region he belongs to. North, south, south, east, west. All right. And control enter to create this dictionary. You can see that the dictionary is created. Dictionary is nothing but it's a key value pair. All right. You can see that I have a key which is customer ID, and the values associated with customer ID is 1, 2, 3, 4, 5. Similarly, I have customer name. The value associated with it is what? A, B, C, D, E. And region north, south, south, east, west. So basically customer 1 है, उसका नाम A है और वो नॉर्थ रीजन में. कस्टमर 2 है, उसका नाम B है, वो साउथ रीजन में, and so on. Now dictionary, if I press dot and press tab, you can see that there are a lot of options out there. A lot of things can be done using dictionary. There are a lot of methods associated with it. We'll take it one by one, but before that, let's talk about something which I want to talk about now is how will I add one more key value pair inside this dictionary. Means कस्टमर आईडी तो डाल दिया मैंने, कस्टमर नेम भी डाल दिया मैंने, रीजन भी डाल दिया मैंने. मुझे अब प्रोडक्ट डालना है कि इसने क्या क्या सामान खरीदा है. सो डिक्शनरी 1, I want to create a new key value pair known as product, and यहाँ पर मैं उसकी प्रोडक्ट डिटेल्स डालूंगा. कस्टमर 1 ने सपोज खरीदा पाइथन का कोर्स, कस्टमर 2 ने खरीदा टैबलो का कोर्स, कस्टमर 3 ने खरीदा सीक्वल का कोर्स, कस्टमर 4 ने खरीदा पाइथन का कोर्स, कस्टमर 5 ने खरीदा आर का कोर्स. If I execute this, something happened. You can see that a new key value pair of product added to this particular value, right? Simple. Now let's say इसने अपना नाम चेंज करा लिया, इसने अपना नाम Z कर दिया. That means what is the key cust name? Which guy changed the name? Can I say that index number 0? In Python, everything is 0. The indexation starts with 0.
in every object. So if I execute this part, you can see that I am getting A. All right. And then I want to update this value with Z. Let's check that. Dict1. You can see that the value is updated successfully. Right. Now, अभी तो ये देखने में ठीक लग रहा है. I have very few key and values. That's why everything is perfect. I see customer ID, customer name, region, product, and values associated with it. That is perfectly fine. But जब अगर मेरी value बढ़ जाएगी, when the values will increase, it is difficult for me to see this table. In that case, I prefer to create a data frame. Now, what is a data frame? अभी तो मैं dictionary के बारे में ही बात कर रहा हूँ, but I'll quickly talk about data frame, and I will show you how we can make data frame using a dictionary. I wanted to tell you because it is interesting stuff. We will talk about data frame in detail, but let me show you how we can create that. So basically data frame क्या है? Data frame is a table in Python. I want to create a table in Python, and that is known as data frame. And how we can create that? So to create a table in Python, either from dictionary or let's say I have Excel file, मुझे Excel file को Python में लेके आना है. जो भी मुझे table type का structure बनाना है, then there is a package known as pandas, right? So as I mentioned in the last class as well, Python is a package driven programming language. उसकी वजह से काफी easy हो जाता है. मुझे ज्यादा line of code लिखने नहीं पड़ते. I can just call a package and done. So there is a package called pandas in Python. This is the website for this particular package. Every package in Python has a website. So this is the package. Pandas by default Anaconda में आता है. If you guys remember, yesterday I told you I want to install Anaconda to install Python. Why we prefer that? Because these are the packages जो कि data science specific हैं. वो by default comes in Anaconda. If you want to check, you can go to Anaconda prompt and you can write pip list. And here you can see that these are the list of the packages. And if I go to P, you can see that pandas is present. This is the version of that package. तो pandas anaconda में तो present है, but मुझे Jupyter notebook पे लेके आना है. तो import pandas. और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एलियास दे देते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट pandas dot pandas dot pandas dot, because pandas is a function, I want to call methods from that, or pandas is a package, I want to call methods from that package. So pandas dot की जगह मैं pd dot कर दूंगा. I'll get all the methods associated with pandas. और उसमें एक मेथड है data frame. pd dot data frame. I want to create a data frame using dictionary 1, and here we go. A table is created from this dictionary where key is my column name and value is my column values. तो मेरा एक table बन गया using a dictionary. So when you want to create a table or a data frame in Python, pandas is the package which you have to use. And again, indexation starts with 0 here as well. You see the first record is 0. This is the index column. And I can obviously save this in, let's say A is equal to. So I created a data frame name as A, and if you want to check the type of it,
you can see that it is a data frame. Pandas.core.frame.data frame. All right. I will talk about data frame in detail maybe in tomorrow's or day after tomorrow's class. As of now, I just wanted to show you that how we can create a data frame using a dictionary. So let's talk about dictionary further. I have dictionary 1. Now dot clear. Now clear is very much self-explanatory that what it will do, right? I will execute this at the end. वो clear कर देगा सारा का सारा, empty dictionary बना देगा. Or let me do it now. Execute dictionary 1. You can see that a empty dictionary is present now. I can very well create this again so that और ये नया value भी add कर देते हैं product. And now when I check dictionary 1, the dictionary is now created again. Let's see what all command we have. Dictionary 1 dot tab copy. Now copy is also self-explanatory. Dictionary 2 is equal to this. Dictionary 2. You can see that it is a copy. Then what else? Dictionary 2 dot from keys. Now what is from keys? What all keys are there? Can I say customer ID, customer name, region, and product? These are the keys. So from keys is a function which is helping me to create a dictionary. All right. Which is helping me to create a dictionary using the keys of this dictionary. मतलब कि मुझे इस डिक्शनरी से कौन कौन से कीज उठाने हैं, वो सारे कीज उठा के मैं एक नया डिक्शनरी बना सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन कस्टमर नेम एंड प्रोडक्ट ओनली. तो मैं क्या करूंगा, एक करली ब्रेसेस बनाऊंगा, कस्टमर नेम कॉमा प्रोडक्ट. अभी एक बार चला के देखते हैं. अब देखो क्या हो रहा है. कस्टमर नेम प्रोडक्ट का मेरा एक डिक्शनरी बन गया है और उसमें नन वैल्यू असाइन हो गया है. सो बेसिकली इट इज क्रिएटिंग अ स्केलेटन ऑफ पेरेंट डिक्शनरी एंड आई कैन ऑल्सो असाइन अ वैल्यू टू इट, कॉमा. लेट्स से मुझे कस्टमर नेम में डालना है, एक नया कस्टमर आ गया फॉर, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर का डिटेल चाहिए. लेट मी मेक इट एज बी and we'll see what happens. And Python for or tab from key expected at most 2 arguments got 3, right? ये मेरा की है, यहां मैंने 2 अलग वैल्यू डाल दी है, इसको भी मुझे करली ब्रेसेस में डालना पड़ेगा. फिर देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है. एग्जीक्यूट. बट दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट? कस्टमर में भी बी टैब आ गया और प्रोडक्ट में भी बी टैब आ गया. इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस. So basically the purpose of this is I have to assign a single value, and now you can see that it is assigning a single value, and I can save this in dictionary 3, and then in dictionary 3 you can do whatever you want. Dictionary 3 product, execute na, की वैल्यू मुझे करनी है which is 0th element. I want to make it as tab. Execute. It's not working. str object does not support item assignment. Okay, so let me make it 0. Execute. Integer object also not supporting item assignment. So basically the only purpose of this option is कि एक skeleton बना के दे देगा, nothing else.
dictionary 3, I get this skeleton, and then I can very well add, let's say, product is equal to tab dictionary 3. You can see the values updated. Okay. Similarly, for the customer name, I can update the value. Let's say B. So I updated the value. So basically, the purpose of this particular command, which is from keys, is to create a skeleton and then finally update the values to it. All right. Dictionary 2 dot tab get. Now what is get? Execute. It requires at least one argument, got 0. Right? So if I will write get, you can see that I have a dictionary 2 and dictionary 2 dot get product. So product will give me entire list of the products. Okay, so it is helping me to fetch out the values or retrieve the values. What else can be done? So we have some more functions. Items. Let's execute without this. You'll see that you're getting all the items to it. Basically, it is giving me entire dictionary items. What are the keys? What are the values? Every value you will get it. Okay. So this is how like a lot of commands we have. Dictionary 2 dot tab. Then we have keys. Obviously, it will give me all the keys, right? It's a key value pair. तो मेरे को सारे के सारे keys आ गए. Simple. Similarly, some more commands we have. Dictionary 2 dot tab pop. Dictionary 2 dot tab pop. Execute करते हैं. Pop expected at least one argument, got a 0. Okay, that is fine. Dictionary 2 pop मतलब इतना तो कल से आइडिया आ गया कि it is removing something, right? Pop is removing something if you remember from the last class. Index डाल के देखते हैं. ऐसा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है because dictionary 2 3 indexation ऐसे नहीं होता है. I have to pass the value product आ गया. Similarly here also I have to pass the value. प्रोडक्ट डाला, प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई, मतलब कि कुछ तो हुआ है. पॉप क्या करता है मुझे पता है, हटाता है. तो आप देखोगे प्रोडक्ट का लिस्ट हट गया. All right. So pop is a command which is helping me to remove the key value pair from the dictionary. But for that you have to pass the key. Product name comes first in the above example because of the ASCII value.
प्रियंका. Now what is the next value? Pop item. Pop item क्या करता है? Pop item मेरा हमेशा आखिरी वैल्यू हटाता है. कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम डॉट पॉप आइटम, आखिरी वैल्यू क्या है मेरा? कस्टमर नेम. कस्टमर नेम हटा दिया, डिक्शनरी 2 देखते हैं, कस्टमर आईडी बचा बस. Okay, so pop item is helping me to remove the last value. डिक्शनरी 1 में चलते हैं, ये 2 में सब कुछ हटा दिया ऑलमोस्ट. डॉट टैब सेट डिफॉल्ट. Now if I execute this particular value, set default expected at least one argument got 0 again. Okay, that's fine. Now what to do? Let's say I'll give marks. Something happened. Dictionary 1. You can see a new key value pair is associated with it and assigning a value as none. तो मैंने एक डिफॉल्ट की डाल दिया है मार्क्स का और उसके साथ एक नन वैल्यू असाइन हो गई. अब बाद में आप उसको आराम से कोई भी वैल्यू दे सकते हो. So when you want to add one more key inside it as a none, you can pass as a set default. Right, so एक नया मेरा की वैल्यू पेयर एसोसिएट हो गया. You can remove this as well. Marks, if you see here, pop item, right? Dictionary 1 dot pop item करूंगा तो लास्ट वाला आइटम चला जाएगा. We already aware of that. Execute this, marks has gone. फिर से एक बार ऐड करते हैं, डिक्शनरी 1 करते हैं और यहाँ पे मार्क्स लगाते हैं और आगे डेल लगाते हैं. That is how also you can remove, right, using del command. Let's say I want to remove R. Is that possible? R क्या है? प्रोडक्ट की का वैल्यू है, आखिरी वैल्यू. What is the index of R? 0, 1, 2, 3, 4. डिक्शनरी 1 का प्रोडक्ट का 4th index is R. Okay, and let's delete it. You can see that the value is deleted. All right. अभी याद है pd डॉट डेटा फ्रेम किया था हमने, यहाँ पे एरर आएगा. Arrays must be of same length. क्यों आ रहा है? Because यहाँ पे 5 वैल्यू है, यहाँ पे 5 वैल्यू है, यहाँ पे 5 वैल्यू है, यहाँ पे 5 वैल्यू है. Sorry, लास्ट वाले में 4 वैल्यू है. So it's of not same length. That's why we are getting this error. 4th इंडेक्स में वैल्यू डाल के देखते हैं, जाएगी वैल्यू. देख लेते हैं एक बार. प्रोडक्ट index number 4. I want to give the value as R again. Okay. एक नया वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो तो वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ रेंज हो रहा है. So I can update the values, all those things can be done, but I cannot add a value. ये लिस्ट है बट यहाँ पे कोई अपेंड नहीं हो पाएगा. देयर इज नथिंग लाइक अपेंड पॉसिबल. Let's say my dictionary again, dictionary 1, and what else we want to do? What else command we have? Set default update and values. अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा है. अपडेट का ऑप्शन चलाने के लिए मैं 2 छोटे डिक्शनरी बनाता हूं.
For example, dictionary 1 and dictionary 2, ये दो डिक्शनरी हैं बट ये दोनों चलो नया ही बना लेते हैं. लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी. डिक्शनरी में ऐसे भी बना सकता हूँ. इफ यू सी हियर 1, 2, 2 arguments required. Right, so if you want to create a dictionary, dict is a command, or you can also do like this. Give me a minute. My dict is equal to curly braces, and I'll give the values like 1:2. My dictionary. Okay, so basically 1 is a key, 2 is a value. So if you want to create a dictionary, you can pass like this, comma, let's say 3:4, comma 5:6, comma 7:8. मैंने डिक्शनरी बना दी. It's a key value, key value, key value, key value. I can pass multiple values. So this dictionary is created. Similarly, I'll create one more dictionary. Let's say 1:10, 8 colon, or I can say 9:20. Okay, I have second dictionary. अब मेरी दो dictionaries हैं, my dictionary and I have my dict2. What I'm looking for is I want to update the value. My dictionary में क्या क्या values है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और my dictionary 2 में क्या है? 1, 10, 9, 20. So when I will do my dictionary dot update my dictionary 2 execute and you check my dictionary again, you can see that मेरा ये वाला वैल्यू चेंज हो गया पहले तो, बिकॉज एक डिक्शनरी में एक ही की हो सकती है सेम नाम की. 1, 2 ऑलरेडी था, वेयर 1 इज ऑलरेडी अ की. दूसरी डिक्शनरी में भी 1 ऑलरेडी है, तो उसने लेटेस्ट वैल्यू को अपडेट कर दिया पुरानी वाली वैल्यू से. So that is updated. Also 920 added. So when you want to update a dictionary with another dictionary, then update command is helping me to do that. All right. And finally, what else we have? My dictionary, or let me put dictionary 1 dot values. Values we already know. It should give me all the values. Okay. So these are the functions or methods associated with dictionary. All right. So this is again one type of Python collection data type. So we spoke about 3 collection data types. One is list, second is tuple, and third is dictionary. To create a list, we require square bracket. It is mutable. I can change the values. Tuple is immutable and it starts with normal bracket. And finally dictionary, which is again I can change the values. All those things can be done. So it is mutable as well, but it starts with curly braces and key value pair is required. I can also do something like this. For example, let's say I have a list or I have a tuple. For example, I have a tuple 1, 1, 2, 3, 4, 5. Execute. अब मुझे पता है कि tuple change नहीं हो सकता. I cannot update tuples.
but I want to update tuples. तो क्या कर सकते हैं? I can do something like this. I am converting a tuple to a list. When I am running pop, I have to pass the key Galaxy 7 9 plus S9 plus. I'm not sure what our name is. When I am passing a pop in a dictionary, it removes when you pass a key as well. However, when we talk about pop item, it will always remove the last key value pair. But list requires square bracket, correct? List requires square bracket, but when we are passing list, now list is a command in Python. तो मैं tuple को list में convert कर रहा हूँ. I'm converting tuple to list by using this command. And now I'll save this in list one. You can very well update the values in the list. For example, let's say मुझे 0th element को करना है 100. List 1 100, and then I can convert this to tuple. Tuple is also a command, but can I overwrite it? Yes, you can. Okay. Dictionary is a key value pair, so I can think logically. Will I able to do that? We'll get only keys. If you try to convert a dictionary to a list, you will get only the keys. So it will not make much sense. Okay. One more thing I want to talk about, that is also interesting stuff. Tuple 1, normal bracket, we already know it starts with normal bracket. That is good. 1 2 3 4 5 6. Now this is a tuple. Let's check that. If you want to check the type of it, it is a tuple. Beautiful. List dictionary 1 will give me only key, Ankit. 2-dimensional list name. This is how it actually behaves. So it's a tuple. But can you say that inside this tuple there is a list? What is the index of this list? 0 1 2 3. So when I write tuple 3, I'll get a list. And we know that I can update list. Right? List is mutable. I want to update the value of 5 to 50. What is the index of 5 inside the list? 1. And I want to update this to 50. Now you can see that tuple 1, the value is updated to 50. All right. Now we know that I cannot update tuple, but it updated the value in the tuple because there is a list inside that and I can update the list. Okay. So that is like जब तक जितना अपने को नॉलेज तक है हाँ टपल चेंज नहीं कर सकते this way you can do the changes. All right, so the next and the final collection data type which we have is known as sets. So we'll create a set. Now what is a set?
If I have a list string integer decimal, how will it sum? It will not sum, obviously. Suppose I have a list 1, it consists of 1, 2, R, 10.5, true. Sum of list 1. It will throw me an error. It will throw me an error, no null value. After I make a tuple, can I add list to make? Can I add bracket to make list? No, no. So I have tuple 1. You are saying that you want to do something like this, right? It will become like this. It is tuple only. This will not make much sense. All right, so now let's jump to sets, which is again a Python collection data types. And to create a set, we also require curly braces. All right. To create a set, we also require curly braces. Now, what is a set? Let me pass a value 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Okay. And now when I create a set, we already created a set and execute. What did you see? You see any pattern out here? कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? It is giving me unique values. So basically sets we use to get the unique values. Similar numbers will be in one set. No, it will give me unique values. Simple. मेरे पास customer name है. There are a lot of duplicates. I want to find the unique values. Sets will be used. Okay. That is what set is all about. So obviously a lot of functions associated with sets also. Dot tab, you can see that there are a lot of functions. सबसे ज़्यादा sets में ज़्यादा function है. Okay. We'll see how it actually works. Add. Bracket. Let me add 100. कुछ तो हुआ. My set 1. You see 100 added. Dot add. ट्राई करते हैं ज्यादा वैल्यू डालने का. Add takes exactly one argument for given. Okay, that is fine. इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के देखते हैं, शायद चल जाए. नहीं चल रहा है. That means I cannot add multiple values in a set. Maybe, right? At least add से तो नहीं कर पा रहा है. So add से मैं एक ही value add कर सकता हूँ. That is what we understand from here. So if you want to add a single value in a set, add is the command we use. What else? My set 1 dot clear. It will clear the set. No
question about it. My set 1, you can see it's an empty set. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. My set 1 dot tab copy is also intuitive. It will create a copy. My set 2, right? Difference between append and append and add is what? Append is a method associated with a list. Add is a method associated with set. You cannot compare append and add because add जो है मेरा set पे चल रहा है, append जो मेरा है वो list पे चल रहा है. But functionality wise अगर देखा जाए तो append में हम लोग सिंगल वैल्यू अपेंड कर सकते हैं, एज ए लिस्ट भी अपेंड कर सकते हैं. ऐड में हम लोग सिर्फ सिंगल वैल्यू ही ऐड कर सकते हैं. ओके, डॉट टैब कॉपी हमने कर लिया. डिफरेंस हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, डिफरेंस अपडेट भी थोड़ी देर बाद करेंगे. डिस्कार्ड पे चलता है. Discard takes exactly one argument. We added 100 to my set 1 and then we clear. We did not clear. Where did we clear? हमने दोबारा ये सेट बनाया ना, 100 तो ऐड किया था हमने अलग से. I did not clear 100. I cleared everything. पूरा का पूरा क्लियर करोगे तो माय सेट पूरा खाली हो जाएगा. उसके बाद दोबारा मैंने ये चलाया तो दोबारा ये सेट आ गया. और दोबारा 100 चाहिए तो you have to add 100 as well. I have discard. Discard requires one argument. Let's say 7. My set 2, you can see that 7 is deleted from the set. अभी डिस्कार्ड में दोबारा चलाता हूं तो एरर थ्रो नहीं कर रहा है, बट कुछ काम भी नहीं कर रहा है. ओके, so discard is a function or a method which is helping me to remove a value. You have to pass the value inside that. 7 मैंने पास किया, it removed 7. Dot tab, what else we have? Intersection अपडेट में थोड़ी देर बाद करूंगा. Disjoint, इस सबसेट, इस सुपरसेट फिर से मैं थोड़ी देर बाद चलते हैं. पॉप पे चलते हैं. पहला वैल्यू था 1, पॉप 1 2, मतलब कि वो पहला वैल्यू यहां पे हटा रहा है. गेटिंग इट? 1 और 2 उसने डिलीट कर दिया. So pop is a command which is helping me to remove the first value from the set. यहां पे 3 डालता हूं. Pop does not take argument. ऐसा क्यों हुआ? Because sets does not support indexation. Now this is very important point. मैंने सेट बनाया, मेरे पास माय सेट 1 है. अब इसका इंडेक्स क्या है गाइस? कैन यू टेल मी द इंडेक्स ऑफ दिस? What is the index of this? 6, right? अब यहां पे हम लोग फंस जाते हैं. Set does not support indexing. Very important. Why? Because मैंने ओरिजिनल सेट में तो बहुत सारी वैल्यूज दी थी, राइट? इफ यू थिंक लॉजिकली, मैं स्लाइसिंग भी नहीं कर सकता. 0:7. There is no option of slicing. There is no option of indexation in sets, guys. Because think logically. यहां पर मैं बहुत सारी वैल्यू पास कर रहा हूं. अब तुम मुझे बताओ तुम मुझे बताओ इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6. बट यहां पर 6 क्या है? 0 1 2 3 4 5 6, राइट? तो मैं जब
एक सेट पास करता हूं, वो मुझे यूनिक वैल्यू देता है, तो देयर इज नो लिंकेज ऑफ पेरेंट सेट विद द क्रिएटेड सेट, बिकॉज यहां मैंने डुप्लीकेट पास किया है। डुप्लीकेट पास किया तो उसका इंडेक्स कुछ अलग होगा, और जो मेरा आउटपुट है उसका इंडेक्स कुछ अलग होगा, इसलिए मैं इंडेक्सेशन नहीं कर सकता सेट में, because there is a mismatch, because there were duplicates. That's why set does not support indexing. तो set indexing नहीं कर सकता, that is you should aware of, right? वापस चलते हैं, my set1 डॉट टैब, पॉप देख लिया, पॉप में इंडेक्स में पास नहीं कर सकता। अब चलते हैं रिमूव पे, मुझे 7 फिर से हटाना है। अब मैंने दोबारा सेट बनाया इसलिए 7 आ गया। लेट मी रिमूव 7। तो माई सेट 1 में 7 रिमूव हो गया। अब तुम बोलोगे डिस्कार्ड भी वही काम कर रहा है, यहाँ पे हमने डिस्कार्ड यूज किया था, वो भी वही काम कर रहा है, रिमूव भी वही काम कर रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है? इफ यू रिमेंबर, जब मैं डिस्कार्ड चला रहा था तो दोबारा जब मैंने डिस्कार्ड चलाया तो ये एरर थ्रो नहीं कर रहा है, जबकि 7 नहीं है वहां पर। बट यहाँ पर 7 नहीं है और दोबारा अगर मैं रिमूव चलाऊंगा तो मुझे एरर थ्रो करेगा। सो बेसिकली रिमूव गिव्स मी एन एरर इफ द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, हाउएवर डिस्कार्ड विल नॉट थ्रो मी एन एरर इफ द वैल्यू देयर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। ओके, तो डिस्कार्ड हमेशा एरर थ्रो नहीं करता, जबकि रिमूव एरर थ्रो करेगा अगर वैल्यू नहीं है तो। सिंपल। डॉट टैब, what else we have? Systematic difference update. I'll talk about that in some time. Pop remove last item. Here pop remove first item. There is no indexation required in dictionary. Galaxy 7S9 Plus. I'm not sure what your name is. डिक्शनरी में मैंने इंडेक्स पास नहीं किया था। डिड आई पास इंडेक्स? Pop item taking the last value. Pop, you have to pass the key. I'm not passing any index. Okay. इंडेक्स में 1 2 पास नहीं कर रहा हूं। डॉट टैब यूनियन, व्हाट इज यूनियन? ऑब्वियसली यूनियन के लिए मुझे एक और सेट बनाना पड़ेगा। माय सेट 1, दो छोटे छोटे सेट बनाते हैं। माय सेट 1 इज इक्वल टू 1 2 3, माय सेट 2 is equal to 3 4 5. Okay, my set 1 dot union my set 2. You see that union क्या होता है? All the values, right? तो इसमें जो जो उसको कॉमन वैल्यू दिख गया उसको वो ले लिया, और जो जो अलग अलग वैल्यू था वो ले लिया। आई एम गेटिंग 1 2 3 4 5, सिंपल। ओके, my set 1 dot tab update my set 2। तो अब इसने क्या किया, my set 1 में ही सारी की सारी वैल्यू डाल दी। यूनियन यूनियन करके my set 1 को अपडेट नहीं कर रहा था। फिर से बनाता है my set 1 my set 2 my set 1, ठीक है। my set 1 डॉट यूनियन क्या कर रहा था? अब my set 1 अगर मैं चेक करता हूं, it is not updating the value, it is just giving me the union and you can save that anywhere you want। बट यहां पर क्या हो रहा है, अपडेट कर रहा है वैल्यू को, इसलिए my set 1 की वैल्यू बढ़ गई। So union is just unioning the value, however update is just updating the value of the my set 1। फिर से बनाते हैं दोनों सेट, my set 1 my set 2। अब चलते हैं पुराने कमांड्स में। my set 1
dot tab difference my set 2. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेट था मेरा 1 2 3, एक सेट था 3 4 5, 1 2 3 3 4 5। मैंने क्या किया, दिस डिफरेंस दिस। तो कॉमन वैल्यू क्या थी, 3, हटा दी, क्या बचा 1 2। सो डिफरेंस इज गिविंग मी 1 2, 3 will be removed, absolutely beautiful. My set 1 dot tab, what else we have, difference update, डिफरेंस तो करेगा और अपडेट भी कर देगा, देखते हैं। my set 2 execute my set 1, 3 हटा दिया, तो उसने डिफरेंस भी कर दिया और अपडेट भी कर दिया, डिफरेंस अपडेट। ओके, सिंपल। लेट्स क्रिएट दिस सेट अगेन। my set 1 dot tab intersection my set 2, 3 आना चाहिए, because I have a set 1 2 3, I have a set again 3 4 5, कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है, 3, आई एम गेटिंग इंटरसेक्शन। डिफरेंस वंस अगेन, डिफरेंस क्या है, माई सेट 1 2 3, माई सेट 2 3 4 5, मैं क्या कर रहा हूं, दिस माइनस दिस, तो इसको प्रायोरिटी लिया, इसमें से कॉमन कौन सा था, 3 हट गया, तो डिफरेंस क्या करेगा, आपको ये बचा हुआ वैल्यू दे देगा। अगर तुम माई सेट 2 डिफरेंस माई सेट 1 करोगे तो 4 5 आएगा। कुशाल, स्नेहा, ये मेन सेट कर रहा हूं मैं। ओके, माई सेट 1 और माई सेट 2 डॉट डिफरेंस माई सेट 1, अब आएगा यहां पे 4 5। अपडेट मीन्स विच अपडेट, डिफरेंस अपडेट, हर्षल, और नॉर्मल अपडेट, दिस वन। I have my set 1, I have my set 2, ठीक है, 1 2 3 3 4 5, so my set 1 dot update my set 2 my set 1, तो इसने क्या किया, my set 1 की सारी वैल्यू रखी और my set 2 की भी वैल्यू उसने ऐड कर दी, अपडेट कर दी। हर्षल, so it deletes common value and ignore secondary value, yes, it deletes common value and ignore secondary value, you can say that. All right, so now I have to create my set 1 again. My set 1 dot tab इंटरसेक्शन, पता चल गया कॉमन वैल्यूज, इंटरसेक्शन अपडेट क्या होगा, ऑब्वियसली अपडेट कर देगा। कॉमन वैल्यूज क्या है मेरी सेट 1 सेट 2 में, 3, तो माई सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट विल गिव मी 3, राइट, सिंपल। तो जो कॉमन वैल्यू था उसने अपडेट कर दिया माई सेट 1 में। ऑल राइट, ब्यूटिफुल, लेट मी क्रिएट 1 2 3 अगेन।
my set 1, my set 1 dot tab, intersection अपडेट हो गया, is disjoint. Now I'll talk about these three functions. Is disjoint, is subset, is superset. मैथमेटिक्स पता होगा अगर, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लेते हैं। एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इस सेट के अंदर वैल्यू है 1 2 3, इस सेट के अंदर वैल्यू है 4 5 6। ये दोनों सेट क्या है, सुपर सेट है, सबसेट है या डिसजॉइंट सेट है? इट इज अ डिसजॉइंट सेट, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। ओके, मतलब कि यहां पर इज डिसजॉइंट पूछ रहा है कि माय सेट 1 इज डिसजॉइंट सेट ऑफ माय सेट 2, फॉल्स ही आएगा बिकॉज 3 कॉमन था। इफ यू रिमेंबर, माय सेट 1 में क्या है 1 2 3, माय सेट 2 में क्या है 3 4 5, तो कॉमन वैल्यू तो दिख रही है 1, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है, देयर इज अ कॉमन वैल्यू, सो आंसर इज फॉल्स। अगर इसमें मैं अपडेट कर देता हूं वैल्यू को, इसको कर देते हैं 6, इसको कर देते हैं, चेक कर लेते हैं 6, अब चलाते हैं तो अब ट्रू आ रहा है बिकॉज अब ये डिसजॉइंट सेट है, अब कोई भी वैल्यू मेरी मैच नहीं हो रही है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, my set 1 dot tab is subset of my set 1, sorry 2, no right, सबसेट क्या होता है, एक बड़ा सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बड़ा सेट है, उसका एक सबसेट होगा जिसके अंदर वैल्यू सुपर सेट से आ रही है, सो दिस इज अ सबसेट, दिस इज अ सुपर सेट। ओके, चलते हैं एक सेट बनाते हैं वैसा, माय सेट 1 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, my set 2 2 3 4। अब मुझे जानना है my set 1 is a subset of my set 2, no, because ये तो सुपर सेट है ना। if I write my set 2 is a subset of my set 1, then it will make sense। अब यहां पे एक और वैल्यू ऐड करते हैं जो कि 11 है, जो कि इस सेट में नहीं है, अब क्या होगा, फॉल्स। मतलब कि सारी की सारी वैल्यू अगर पेरेंट सेट से आ रही है देन ही वो सबसेट कहलाया जाएगा, वरना वो सबसेट नहीं कहलाया जाएगा। ओके, so suppose if I have a value out here which is 11 as well, this will not considered as a subset। now is my set 1, अब यहां पे 11 हटा देता हूं मैं, my set 1 dot is superset my set 2, true। माई सेट 1 सुपर सेट है माई सेट 2 का, बिकॉज माई सेट 2 की सारी वैल्यूज माई सेट 1 से आ रही है, सो माई सेट 1 इज अ सुपर सेट। ओके, गुड, एक सेट बनाते हैं फिर से, माई सेट 1, माई सेट 2, two commands left, my set 1 dot tab symmetric difference, my set 2, दोनों में डिफरेंस क्या था, कोई डिफरेंस था ही नहीं,
अगर यहाँ पे मैं ए रखता और ये चलाता तो ये नहीं आता। ओके, तो ये क्या कर रहा है, जो भी मेरी वैल्यू कॉमन है उसको हटा देगा और बाकी वैल्यूज दे देगा। समथिंग लाइक I have a set, it will give me only these values, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी in symmetric difference. Okay, common values are not participating. Similarly, my set 1 dot symmetric difference अपडेट क्या करेगा, अपडेट कर देगा ये वाली वैल्यू से my set 1 को अपडेट कर देगा। my set, so now if you check my set 1 you can see that a हट गया है और सारी की सारी वैल्यू बाकी की आ गई है, बिकॉज ए कॉमन था तो वो नहीं आया। ऑलराइट, so this is about sets. We spoke about all the methods associated with sets, and I think this is sufficient for today. Any questions you have, please let me know. I'll take a pause here and we'll connect again tomorrow.